हेलो गाइस, वेलकम टू द फुटबॉल पार्लियामेंट। तो ऑलमोस्ट एक ईयर के एब्सेंस के बाद फ्रैंक लैम्पार्ड इज बैक टू मैनेजमेंट, बैक इन द प्रीमियर लीग। उसके मैनेजरियल करियर का थर्ड बड़ा जॉब है आफ्टर डर्बी काउंटी, चेल्सी, नाउ इट्स एवर्टन। यस, फ्रैंक लैम्पार्ड हैज बीन announced as Everton's new manager। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है बिकॉज एवर्टन हैव बीन रियली एक्टिव इन द विंटर ट्रांसफर विंडो एज वेल। तो डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट, एवर्टन के लिए क्या ये मीन करता है, हाउ दे कुड लाइन अप, what could the possible tactics be. Joining me in today's discussion is Adit, a hardcore Premier League fan. So Adit, what do you make of this move? मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही एक्साइटिंग मूव है। स्पेशली सारे चेल्सी फैंस चाह रहे थे कि फ्रैंक लैम्पार्ड फिर से आए मैनेजमेंट में और प्रीमियर लीग में ही आ गए हैं, तो ये और भी अच्छा न्यूज़ होगा। प्लस मैं इससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्लेयर बैटल तो चलती रहती थी बिटवीन जेरार्ड एंड लैम्पार्ड, बट अभी तो आप मैनेजर में भी देखते हैं और थर्ड मैनेजर भी है क्रिस्टल पैलेस के पैट्रिक वेरा। तो और वेरा अभी वर्सेस लैम्पार्ड आर्सेनल भी Mikel Arteta है, so this is the new generation that has taken over. These players that यस were दैट the stars of the Premier League 2000s may have become full-time Premier League managers. बात करेंगे फ्रैंक लैम्पार्ड की एंड हाउ ही कैन गो अबाउट हिज बिजनेस। लेट्स जस्ट डिस्कस इनके विंटर मूव्स। तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव क्लब्स रही है इन द विंटर। इनके विंटर का सबसे पहला था एक डिपार्चर विच वाज लूका डीन गोइंग टू एस्टन विला। तो वो एक बड़ा मिस हो सकता था बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट टू इट, बट फ्रैंक लैम्पार्ड द वे ही मैनेज्ड इन चेल्सी, उसमें फुल बैक्स का बहुत कंट्रीब्यूशन था टू क्रिएटिविटी। वाइड प्ले, विंग प्ले बहुत ज्यादा था, बट दे हैव रिप्लेस्ड हिम विद मिकेलेंको। अब वो एक अनटेस्टेड, एक अनयूज्ड प्रोडक्ट है। हाउ इज ही गोना डू, वील हैव टू वेट एंड वॉच। आई हैवंट सीन एनी ऑफ हिम, बट जो मैंने सुना है वो प्लेयर के बारे में, या डू यू हैव एनी टेक्स ऑन हिम? यही बात है कि फ्रैंक लैम्पार्ड कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिमसेल्फ। हमने देखा ही है क्या किया है माउंट एंड रीज गेम्स के साथ। मतलब सीजन में लाके चैंपियंस लीग फाइनल खेल रहे हैं, तो ऐसा क्वालिटी बिल्ड किया है दोनों के अंदर। तो डेफिनेटली। मुझे डाउट तो है ही नहीं कि ऐसा कोई यंगस्टर्स लाके ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि या he has the ability to get the best out of them. नहीं, So फॉर श्योर वन बिग हाईलाइट उसका चेल्सी करियर का यही था, ही गॉट द बेस्ट आउट ऑफ यंग प्लेयर्स, ही नर्चर्ड देम, डेवलप्ड देम। ये जो इंग्लिश यंगस्टर्स है, बी इट डेले आली या फिर गॉर्डन, दीज आर द वेरी प्लेयर्स जो बड़े हुए हैं फ्रैंक लैम्पार्ड जैसे मिडफील्डर को देखते हुए, उसकी गोल स्कोरिंग को, दे सॉर्ट ऑफ आइडलाइज्ड हिम एंड नाउ ही इज गोना बी द मैनेजर। डेले आली ने अपने ये इंटरव्यू में भी कहा था कि Lampard was one player that he always looked up to, and he's already had positive talks with Lampard. I was at Mikalenko. What I've heard of the left back is he started his youth career as a left-sided centre back, but gradually उसके coaches ने ये realize किया कि उसके best aspects is his stamina. He covers every inch of the pitch, and gradually his crossing has developed really, really well. So this is a very interesting aspect. जल्दी से दूसरे moves की बात करूंगा. They've got Donny van de Beek on loan from Manchester United and Dele Alli on a free from Tottenham. And they've also got Anwar El Ghazi from Aston Villa. And ये सब players को when you add to the current existing group of players, this becomes a very, very interesting Everton squad. speaking about Dele Alli, हमने तो Yeah. खैर देखा ही है कि young Dele Alli was one of the most promising talents there. बहुत ही सारे मैनेजर्स और कितने सारे पंडित्स का फेवरेट प्लेयर था, बहुत ही अच्छा प्लेयर था स्पर्स के लिए, बट लेटर ऑन ही लॉस्ट हिज शाइन। बट मैं अभी यही बोल सकता हूँ कि इफ डेले अली को फिर से फायर अप करके थोड़ा फिर से ला सकता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा एवर्टन के लिए, और बहुत ही अच्छा मूव होगा। एंड फ्रैंक लैम्पार्ड जैसा ही स्टाइल अगर डेले अली में इनकॉर्पोरेट किया जाए तो अच्छा ही मजा आ जाएगा देख के। तो that's a very good point that you made कि फ्रैंक लैम्पार्ड का जो प्लेइंग स्टाइल था, if you had मैंने एक स्काई स्पोर्ट्स का रिसेंटली पॉल मर्सन का एक इंटरव्यू देखा था, he believes कि डेले अली जो रिसेंटली जो रोल टॉटनहम में प्ले किया है, he is dropping a lot deeper to receive the ball, getting involved in the play.
वो उसका बेस्ट एट्रीब्यूट नहीं है. उसका बेस्ट एट्रीब्यूट प्रॉब्ली वो है जो हम लोग ने 15, 16, 17 के टाइम देखा था, मेकिंग लेट रन्स इनटू द बॉक्स. ही इज अ ग्रेट फिनिशर, ही गोल इज गॉट द स्कोरिंग. लॉन्ग शॉट. So this is, you can draw some similarities between him and Lampard. So अगर एक बंदा है who can get best out of Dele Alli, it is definitely Frank Lampard. नेक्स्ट स्पीकिंग अबाउट डॉनी, बहुत ही एज अ यूनाइटेड फैन मैं तो बोलना ही चाहूंगा अच्छा मूव है डॉनी के लिए. बहुत ही सफर किया है उसने, और मिडफील्डर है तो आई थिंक जैसे हम देख रहे थे कि यूनाइटेड में डीएम की बहुत डिफेंसिव मिडफील्डर की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, बट एवर्टन में ऐसा नहीं होगा. उसको अगर नंबर 8 पोजीशन दे दिया अगर अंडर फ्रैंक लैम्पार्ड, तो ही कैन डू समथिंग ओवर देयर. बहुत ही अच्छा खेल सकता है. एंड ऑब्वियसली फ्रैंक लैम्पार्ड तो खैर यंग प्लेयर्स और ऐसे प्लेयर्स को अच्छा कर ही सकता है. लुकिंग एट माउंट नंबर 8 पोजीशन पे जैसा उसने खेला है, अगर थोड़ा भी वॉन्डे भी ऐसा ही खेल ले तो बहुत ही अच्छा. एवर्टन का मिडफील्ड तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. For sure. So you spoke about number 8 position. This brings me to how Lampard could line up, how Everton could line up under Frank Lampard. So अगर हम लोग जाए of what we saw at Chelsea, he always preferred a 4 at the back. I think on very rare occasions we played with a back 3. So maybe 4 at the back is something that's going to happen. Now I personally see either a 4-3-3 or 4-2-3-1. ये दो ही formations में Lampard used to switch very often. तो गोल में तो जॉर्डन पिकफोर्ड रहेंगे ही, there's no doubt about that. Left back, they've already signed Mikalenko. He's played one whole 90 minutes of Premier League football. I didn't personally see the match, but I'm excited about this young player. On the centre backs, they've got the options. They've got Michael Keane, they've got Yerry Mina, nothing new over there. They've got Ben Godfrey, who's a very accomplished back. उनका जो राइट बैक है शेमस कोलमैन है. आई स्ट्रेस्ड ऑन हाउ फ्रैंक लैम्पार्ड जो चेल्सी में था उसका जो स्टाइल ऑफ प्ले था डिपेंडेड हाईली ऑन द क्रिएटिविटी ऑफर्ड बाय हिज फुल बैक्स. तो इसमें शायद से शेमस कोलमैन की अटैकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी. ही इज नॉट द यंगेस्ट एनीमोर. उसके लेग्स आर नॉट एग्जैक्टली द फास्टेस्ट यू कुड से. मिडफील्ड पे जाएंगे जो midfield पे जाएंगे जो I think is the strongest aspect of the Everton squad, because they are stacked in the midfield if you think about it. They've got Allen and Doucouré from before. Both of them are great players. They can play the holding mid position. They can play box to box. I think Allen is injured, if I'm right. Doucouré. Allen is not Allen. Okay, Doucouré, sorry, yeah. So Doucouré is out with a thigh injury, but they've still got Allen. They've got Van de Beek and Dele Alli. तो वहाँ पर एक थोड़ा सा issue हो सकता है, because probably both of the players prefer, the number 10 position. But I personally feel कि Donny Van de Beek will play a little deeper than Dele Alli. So in case it's a 4-3-3, then we'll have two number 8s जिसमें Dele Alli will further push it to, at times it could become a 4-2-3-1 जिसमें Van de Beek is playing deeper. Another very exciting player, Joe, probably you could say has been Everton's player of the season so far, or at least player of the season in the last few months, has been Gordon. A great talent. Another very young player who's shown a lot of promise. He can play a central position. He can play out wide. So they've got players there. और भी backups है in the form of they've got Townsend जो free transfer था, इतना अच्छा proof हुआ वो. Against United इतना अच्छा गोल मारा भी था. और Townsend is out wide. In the center they've got other covers in form of Andre Gomez, Dele Alli, as I mentioned. Wide की बात करें तो they've got Gray, but Gray started really well, but and as I mentioned, Gordon, he can play on the left. I think left wing is his predominant position. They've got good injury news in terms of Dominic Calvert-Lewin, because he's back. Now he will be hoping to receive a lot more of service, and obviously Richarlison here. So if you look at this squad, you can actually see that Lampard can do great things out of it. And ये squad definitely ऐसे नहीं है which should be in the relegation battle, because अभी उनकी current position देखेंगे in the Premier League, I think it's 16th or something. 4 positions clear of relegation. 8 point above Norwich. So I don't think they're in a relegation battle, to be honest, because they've also played 20 games compared to 22. But still, इतना ज़्यादा नीचे है on the league table
there is a reason, उनका previous manager Rafa Benitez sack हुआ. So ठीक है, now there's a change in the helm. There's Frank Lampard coming in, and there's a lot to be looking for. I personally am going to see each and every Everton game now. And obviously, there's the big one when Chelsea go to the Goodison Park, when Frank Lampard will be facing Chelsea. Another very, very exciting day to look I'm out more for. excited to see the match between Aston Villa and Everton. That will be more exciting. Like, totally, Aston Villa and Everton. Frank Lampard and Steven Gerrard as And touchline Dini battlers. against his old club. There's Tina. But I think, if I'm correct, ये season के दोनों matches हो चुके हैं between Aston Villa and Everton. I'm not I sure, think but हो गए. ठीक है. I'm pretty sure the Nevertheless, way next season है, the way Steven Gerrard has started, उसका भी transfer window काफी promising रहा है. There's Luca Dean, there's Philip Coutinho and all. So it's going to be very interesting. Just before wrapping up the video, where do you predict Everton will finish in the league this season? What place do you think they'll finish? Difficult to predict, but sure, इतना तो sure है कि relegation तो हो ही नहीं रही है. But I think थोड़ा difficult जा सकता है season start में, but 15th position, 14, 15 तो खैर possible है, कर भी सकती है. I'm gonna go one step more optimistic. I think Everton will. I'll give two predictions over here. I think they're gonna finish in the bottom half, but in the top part of the bottom half, I can see 13th. I'm probably gonna go for 13th. And my other bold prediction is gonna be that Frank Lampard is gonna win his first game against Chelsea when Chelsea traveled to the Goodison. I think वो 13th position का prediction Calvert-Lewin पे भी अच्छा काफी डिपेंड डाल सकता है, because बहुत उसका जैसा बोला जाए कि wing play और full backs का अच्छा है, तो अगर crosses अच्छा है तो we all know Dominic Calvert-Lewin का header बड़ा अच्छा है. Yeah, one of the first people you want in the box for a good cross, for sure. Yeah, that's true. तो वही देख सकते हैं अगर he can get the best out of Calvert-Lewin. तो possible तो है ही 13th, ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है. But you all also make sure to drop in your views. Do you all see Frank Lampard succeeding at Chelsea? कौन सा league position you all predict for Everton with Lampard in the helm? And yes, that was the video from today. From us today. Thank you if you are listening till the end. काफी अच्छा conversation था with Adit. And for more top quality football content, keep listening to the Football Parliament.